Two small balls A and B, each of mass m, are joined rigidly by a light horizontal rod of length L. The rod is clamped at the center such a way that it can rotate freely about the vertical axis passing through the center. The system is rotated with an angular speed omega about the axis. A particle p of mass m kept at rest sticks to the ball A as the ball collides with it. Find the new angular speed. एक रोड ए बी, इसका सेंटर इज ओ, यहाँ पे क्लैम्प्ड है ओ पर और इसके अलोंग एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर सकती है। तो एक यहाँ पर बॉल है, एक बॉल हेयर, दिस इज एम एम, ओ बी इज L/2 एंड दिस इज L/2। इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ inertia IO will be m L/2 का स्क्वायर प्लस m L/2 का स्क्वायर 2m L स्क्वायर बाई 4 m L स्क्वायर बाई 2। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल LO is IO into omega is equal to ml square by 2 omega. Question number 1. Now, a particle sticks to ball A. A ball, B ball, this is center O, यहाँ पर clamped है, this is O. A particle of mass m stick here. This is m, this is m, and this is m. L/2, L/2. So final moment of inertia about O, IF, is equal to m L/2 का स्क्वायर प्लस 2m L/2 का स्क्वायर, 3m L स्क्वायर बाई 4, 3m L स्क्वायर बाई 4। Suppose angular velocity is omega f. So final angular momentum is IF into omega f, 3 ml square by 4 into omega f, equation number 2. No torque is applied on the system, so LF will be equal to L initial, 3 ml square by 4 into omega f is equal to ml square by 2 into omega. ml square से ml square 2, omega f is 2 by 3 omega.